And the question is saying, explain how infrared radiation is used in television remote controllers. So remote controllers की जब मैं बात करता हूँ, let's say you have this remote controller. It may be a TV remote, it may be an air conditioner remote, हो सकता है ये किसी और device का remote हो. So remote controllers, how do they work? They have a transmitter. उनके अंदर एक transmitter होता है that produces an electromagnetic wave, and the electromagnetic wave that these remotes produce, it's called infrared radiations. Infrared radiation. And here is the device. ये आपका TV है, या आपका AC है, या any device that works on the remote controller. It will go strike the receiver that's present inside the device. यहाँ पर एक receiver होता है. This receiver will receive the signal, and then it has a programmable device, program हुआ होता है, and that device receives the signals, decodes it, and follow the instruction. If the signal is to increase the volume, it will do so. If the signal is to change the brightness, it will do so. If the signal is to change the channel, it will do accordingly. So basically, the remote controller will emit an electromagnetic wave that's called infrared radiation. आप signal भी बोल सकते हो. It's received by the TV set and it's decoded. And the device works accordingly. So लिखो इसके लिए, the remote will transmit an infrared signal. So this is one mark, transmitting a signal. And along with this, इसके साथ इसी एक mark के लिए एक और important बात लिखनी है, एक और important statement. And the television set receives it. Transmit अगर कर रहा है और TV receive नहीं कर रहा, that would not work. सही है? आपने गलत direction में किया, projector का remote है, तो आपने side पे किया हुआ है, वो काम नहीं करेगा. Receive the signal. This is one mark. It is then decoded. Receive करने के बाद क्या होता है? Decode होता है. And the TV works accordingly. एक और question है. Some of electromagnetic radiation is produced by the sun and travels from the sun to the earth. Some of the statements below are true and some of them are false. Put a tick in the box each after statement to show whether it is true or false. Gamma rays are used to kill cancerous cells but can also cause cancer. Is this true? Right. So the first, it says gamma rays are used to kill cancerous cells but can also cause cancer. Yes. The second is infrared is used in sunbeds. No. Sunbeds में हम ultraviolet use करते हैं. Sunbeds में हम ultraviolet use करते हैं. And infrared is used in remote controls. All right, then radio waves have highest frequency in the electromagnetic spectrum. No, they have highest wavelength. Frequency नहीं, highest wavelength होती है. Highest frequency वैसे किस चीज की होती है? Highest frequency gamma rays की होती है. And lastly, the higher the frequency of the radiation, the smaller is the wavelength. Yes, frequency अगर मैं बात करूं, since frequency is equals to V over lambda, so frequency and wavelength are inversely proportional. If you increase the wavelength, the frequency will decrease and vice versa. So this is true. Right. The next question is this one. The Earth is 1.5 exponent 8 kilometers from the sun. State the speed of light in vacuum. So it's simply asking you speed. It's asking you speed. Speed has a value of, you need to remember this, speed has a value of 3.0 exponent 8 meters per second. Then it says calculate the time taken for the light to travel from the sun to the earth. So time taken for the light to travel from earth to sun, time is what? Distance is equals to speed multiplied by time. So time will be equals to distance upon speed. Distance is what? Distance they have given to me as 1.5 exponent 8 kilometers. So 1.5 exponent 8 kilometers का मतलब क्या है? 1.5 exponent 8
kilometers. Now remember, kilometers, K means 1000. K means 1000 and 1000 means 10 power 3. K का मतलब क्या होता है बेटे? किलोमीटर्स में K का मतलब होता है 1000, right? And 1000 का मतलब होता है 10 की power 3. So if it's 10 power 3 and you already have a 10 power 8, so इसको मैं कैसे लिखूंगा? 10 power 8 and into 10 power 3 will make it 10 power 11. ठीक है? So that means मेरे पास जो distance होगा it would be 1.5 10 power 11 over speed, that's 3.0 exponent 8. 500 seconds is the right answer. 500 seconds. So it means it take for the sunlight to reach to us about 500 seconds. That is 8 minutes. That means if someday the sun goes on a trip or वो light देना छोड़ दे, we'll get to know about 8 minutes later. आगे बढ़ते हैं. एक question और. Most of the energy emitted is in 3 regions of the electromagnetic spectrum. Name of the one of the 3 regions is ultraviolet. State the name of all 3 regions in order of increasing frequency. तो बेटा सन तीन टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, infrared, ultraviolet and visible light. Infrared, ultraviolet and visible light. You need to put them in sequence. Infrared has the smallest frequency, then it's visible light, and then it's ultraviolet. Some of the ultraviolet radiations emitted by the sun reaches the surface of the earth. Give one possible damaging effect of ultraviolet radiations on the human body and the property of ultraviolet radiation that causes this damage. So ultraviolet का एक damage क्या हो सकता है? It can cause skin cancer, cataracts हो सकती हैं. And why does it do? कौन सी property है जो basically ये सारी चीजें cause करवाती हैं? Which property causes this? High frequency की वजह से आपके पास ionization होती है, ठीक है? Due to its high energy and high frequency, it's due to high energy and high frequency. इसकी वजह से क्या होता है? It causes ionization. उसके बाद आपके पास एक और question आता है. The question is, electromagnetic radiation is transverse wave. Describe the difference between transverse and longitudinal waves. So transverse or longitudinal waves ka difference. What is the difference? In transverse wave, the direction of vibration of particles के बजाय आप medium भी लिख सकते हो, is parallel to the direction of wave. While in longitudinal waves, ये मैंने parallel लिख दिया क्या? गलत लिखा है. It's not parallel, it's perpendicular. ठीक है? Perpendicular. While in longitudinal waves, it's parallel. बस parallel और perpendicular का फर्क है. दोनों में vibrations होती हैं, दोनों में wave propagate करती हैं, दोनों में wave move करती हैं. एक question और है, and question आपसे कह रहा है, X-rays are transverse waves that are part of the spectrum. State the name of the spectrum of the waves that include X-rays. So X-rays जिस spectrum में होती हैं उस spectrum का नाम बताओ. अच्छा, ionization क्या होती है? देखो, ionization is basically when electron of an atom is removed. जब किसी भी वजह से, अब वो वजह हमें पता नहीं करना, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमारे cells जो होते हैं उनके अंदर atoms होते हैं. जब electromagnetic radiations जाके उनको hit करते हैं तो ये atoms अपनी electrons lose कर जाते हैं. So this loss or gain of an electron is called ionization. All right. So ये question है. Now आपसे पूछ रहा है spectrum का नाम क्या है? It's called electromagnetic spectrum. What is meant by frequency? Frequency is the number of waves formed per unit time. या number of oscillations भी कह सकते हो, number of cycles भी कह सकते हो, ठीक है? Number of oscillations या number of waves का एक mark, and per unit time mention करने का दूसरा mark. State the name of the waves in this spectrum that has the greatest frequency. सबसे ज़्यादा frequency किस चीज़ की होती है बेटे?
गामा रेज की होती है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। चलिए एक क्वेश्चन और है, एंड ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, शायद मैं इस क्वेश्चन के लिए ये सारा चैप्टर कराता हूँ। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। ये आता है, कभी कभी आता है, लेकिन आता है। सो X-rays are used in hospitals to produce an image of broken bones. How this is done? You may draw a diagram if you wish. Broken bones की image कैसे बने? अच्छा, इसको समझाने के लिए I would like to take the help of another diagram. Right. ये अगर आप इसको गौर से ऑब्जर्व करो, you will see some white regions, some gray regions, and then a very dark black region. Actually ये जो sheet था ना, it was white like this, ऐसी white sheet थी। When the X-rays comes into contact with the sheet, X-rays इस sheet को ionize करके ऐसा black कर देती है। So it's the X-rays जो कि आपके पास इस white sheet को, बिल्कुल ऐसा transparent sheet था ये, when the X-rays ionizes the sheet, it turns into dark black sheet. अभी जो dark black sheet है, how does it happen? ये bones की image कैसे बनती है? भाई आपके पास जब आप एक्सरेज डायरेक्ट करवाते हो तो व्हाट हैपेंस, जैसे आप सन के आगे खड़े होते हो ना, तो आपका एक शेडो इमेज बनता है। क्या बनता है? शेडो इमेज बनता है। सो सिमिलरली एक्सरेज भी शेडो इमेज को फॉर्म कर रही होती हैं। व्हेन इट हिट्स दिस रीजन ऑफ द शीट, there is no bone, nothing to stop, nothing to absorb the X-rays. The X-rays goes directly, strikes the sheet, ionizes it and turn it black. अच्छा, अब ये वाला रीजन जरा देखो, ये जो ग्रे रीजन है, here it is the flesh, ये आपके पास जो है ना मीट है, यहाँ पर ये आपके पास गोश्त है, ठीक है। सो ये जो पार्ट है आपके पास मसल्स वाला पार्ट, what happens is the X-rays partially pass through this. The X-rays partially pass through this. अब कुछ X-rays पास होती हैं, कुछ इससे रुक जाती हैं। So what will happen? ये शीट आधी आयनाइज हो जाएगी, आधी रह जाएगी, एंड इट विल लुक ग्रे। कैसे नजर आएगा बेटा? ग्रे नजर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूं, ये बोन है, इसने कंप्लीटली एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लिया है, ब्लॉक कर दिया, एक्सरेज पीछे जा ही नहीं रही है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर आपके पास ये व्हाइट रीजन रह जाएगा, एंड दिस व्हाइट रीजन इज बेसिकली द शेडो ऑफ द बोन। ये बोन का शेडो है। जैसे हमारा एक डार्क शेडो बनता है जब हम सन के आगे खड़े होते हैं, तो एक्सरेज में आपके पास एक ब्राइट शेडो बनता है, शेडो इमेज प्रोड्यूस होता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, लेट्स से आपके पास ये एक बोन का पार्ट है एंड दिस इज ब्रोकन, ठीक है, एक ब्रोकन बोन है आपके पास, इसका तुमने एक्सरे इमेज बनाना है। यहाँ पर तुम्हारे पास एक्सरे मशीन है, एक्सरेज पास हो रही है यहाँ से, यूं स्ट्रेट हिट कर रही है इस बोन को, बोन के थ्रू भी पास हो रही है, एंड ये वाली एक्सरे जो है ना, ये बोन से गुजर जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस बोन के सराउंडिंग में फ्लैश भी है, कुछ रेज जो है ना यहाँ से पार्शियली पास होंगी, ये वाली रेज, ये वाली एक्सरेज, एंड यहाँ पर जो शीट है this will look bright, ये वाला रीजन, क्योंकि ये एक्सरे बोन से पास होकर डायरेक्टली एक्सरे शीट को हिट कर रही है, दिस पार्ट विल लुक डार्क। ये वाला पार्ट डार्क दिखेगा, डार्क दिखेगा। ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये आपको ब्राइट दिखेगा, ये वाला पोर्शन आपको फिर से ब्राइट दिखेगा। सो जो डार्क रीजन आ रहा है ना एक्सरे में, जो डार्क रीजन होती हैं बोन्स की बीच बीच में, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स व्हाट, दैट इंडिकेट्स द क्रैक। सो ये डार्क रीजन है, इट्स टेलिंग यू कि यहाँ पर क्रैक बन रहा है, क्रैक बन रहा है। सो यहाँ इसके लिए हम लिखेंगे क्या, आंसर को फ्रेज कैसे करेंगे? एक्सरेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट with suspected broken bone, and the X-rays will pass through the flesh but not to the same extent through the bones. Image will be produced by digital or an electronic detector, जो जाहिर है आपके पास यहाँ पर मौजूद होता है। लिखिएगा इसके लिए आंसर, X-rays are directed the body part with suspected broken bone, एक मार्क। X-rays will pass through the flesh but not through the bones, and जाहिर है जहां से ब्रेक हुआ है वहां से भी पास हो जाएंगी,
pass through the flesh and the crack, but not through the bones. But not through the bones. And the image is produced by digital detector. By digital detector. Explain why X-rays are not used for prenatal scanning. यहाँ dangerous पता चलता है हमें. X-rays can cause cancer. It can cause cell mutation. It can cause birth defects. It can cause miscarriage. X-rays shows the bone structure rather than the fetal development. X-rays बहुत ज़्यादा strong होती हैं, तो इसलिए X-rays आपको जो structure दिखाती हैं, it will be showing you the bone structure. आपको fetal development नजर ही नहीं आएगी उसमें, तो इसलिए हम prenatal scanning में use नहीं करते. Prenatal scanning is pre-birth scanning, ठीक है? Pre-birth scanning को हम prenatal scanning बोलते हैं. तो X-rays का काम prenatal scanning नहीं है, बल्कि X-ray का काम जो है bone scanning है. वो बोन्स को डिटेक्ट करेगा. वो तो आपके पास टिश्यूज, सेल्स, टेंडन्स, फ्लैश, इनके बीच में, मसल्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाएगा. एक्सरेज कैन कॉज कैंसर. एक्सरेज कैन कॉज कैंसर इसलिए भी नहीं करते कि कैंसर हो सकता है. या फिर आप ये लिख दो, एक्सरेज कैन कॉज सेल म्यूटेशन. ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सेल म्यूटेशन. एक मार्क के कोई भी एक पॉइंट लिख दो. इट कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स. बर्थ डिफेक्ट्स जिसको हम मिसकैरिएज भी हो सकता है, मिसकैरिएज. और इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्सरेज जो है ना बोन स्ट्रक्चर के लिए यूज होती हैं रादर देन प्रीनेटल. इमेज क्लियर नहीं आएगा. सही है. एक्सरेज आर यूज्ड फॉर शोइंग बोन स्ट्रक्चर्स रादर देन फीटल डेवलपमेंट. ठीक है, राइट. अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरे फेवरेट क्वेश्चंस में से. अच्छा जी, so figure 8.4 shows connection to the internet made from a remote station using satellite above the Earth's surface. Data is sent between stations A and B using microwaves which travel to and from the satellite. Now, section B is connected directly to the internet using optical fiber. ये B को ऑप्टिकल फाइबर के साथ डायरेक्टली आप कनेक्ट कर चुके हो. स्टेशन A सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है. Speed of the wave 3.0 exponent 8 meters per second. Section A and B are each 560 kilometer from the satellite. थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है. ठीक है. Now, सबसे पहली चीज ये है कि ये आपसे पूछ रहा है, calculate the time taken for the data to travel from A to B using microwaves. A से B माइक्रोवेव्स के थ्रू जो ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है. तो गौर से देखिएगा, A से B गया, ये डिस्टेंस इन्होंने कितनी दी हुई बेटे, 560 किलोमीटर्स. ये डिस्टेंस 560 किलोमीटर्स है. फिर ये वाली डिस्टेंस फिर से 560 किलोमीटर्स है. 560 kilometers, 560. You need to take the time. So speed कितनी लगी है बेटा? Speed आपके पास given है 3.0 exponent 8 meters per second. So they are asking about total time. Time will be equals to distance upon speed. Distance आपके पास है 560 kilometers. 560 किलो. किलो का मतलब होता है 1000. So इसका मतलब है, मैं इसको लिख देता हूँ 560,000 meters, क्योंकि टाइम मुझे अक्सर सेकंड्स में निकालना होता है. सो डिस्टेंस इज 560,000. बट वेट, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई. इट्स ट्रैवलिंग 560 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड देन बैक टू बी. तो 560 kilometers into 2 divided by the speed. Speed कितनी गिवन है बेटे? It's 3.0 exponent 8. 3.0 exponent 8 meters per second. It's 3.7 exponent minus 3. 3.7 exponent minus 3. You can write this as, इसी बात को 10 power minus 3 means milliseconds, right? Milli. So you can write this as 3.7 milliseconds. सही है. या फिर 10 power minus 3 का मतलब है divide by 1000. You can also write it 0.0037 seconds.
either way you like it. तो चलो 0.0037 लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए सबको आसानी से. Now the next part is the same data can be sent from A to B in a shorter time along the surface of the earth using infrared waves to carry information in optical fibers. Infrared और microwave की speed same होती है लेकिन infrared हम optical fibers में use करते हैं. State one property that infrared waves and microwaves have in common. Common properties सारी electromagnetic waves की मैंने आपको बताई थी. They travel with the same speed, they can reflect, they can all travel in vacuum, they are all electromagnetic waves, they are all transverse, they all carry energy, they have larger wavelengths. So basically कोई भी आप इसमें से एक लिख लो, कोई भी एक property, they are all transverse waves. They are transverse waves. One advantage of using optical fibers to connect A and B directly. अच्छा, ए और बी को अगर डायरेक्टली आप कनेक्ट करो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू तो ऑप्टिकल फाइबर हैज दिस एडवांटेज कि देयर इज लेस चांस ऑफ हैकिंग, देयर इज लेस चांस ऑफ इंटरसेप्शन, देयर इज ग्रेट सिक्योरिटी इन ऑप्टिकल फाइबर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो कोई भी पिक कर सकता है, कोई भी अगर टेक्निकल बंदा हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पिक करके वो डिटेक्ट कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन इसमें जा रही है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये होता है. फिर ऑप्टिकल फाइबर्स जब एक कंप्लीट वायर होती है देयर इज नथिंग इन बिटवीन टू इंटरसेप्ट इट, उसको कोई रोक नहीं सकता. सही है. इसी तरीके से हैक नहीं हो सकता. देयर कैन बी मोर चैनल्स, किसी ने बैंडविड्थ लिखा है, बिल्कुल ठीक है. More channels, more bandwidth is possible, more data can be transmitted. कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट को आप सेव कर सकते हो. जो खर्च आप सैटेलाइट पे कर सकते हो, सैटेलाइट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और हर जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती सैटेलाइट को जो है लॉन्च करने की. तो या आप क्या कर सकते हो, आप वो कॉस्ट ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में खर्च कर सकते हो. ठीक है. सो वन अदर एडवांटेज, कोई भी एक लिख लो, बेटर बैंडविड्थ लिख लो. बेटर बैंडविड्थ का मतलब है more data can be transmitted. ठीक है. आप इसको कह दो more security. ठीक है. faster speed, less interception. कई सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो इसमें. अच्छा, ये चीज हो गई. ये भी मैंने करा दिया. 2023 से पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए. This is one question that I would want you people to take a screenshot of. इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो. ठीक है. सॉल्व. अच्छा, इसको भी आंसर करो जरा. इसका आंसर 1.5 एक्सपोनेंट 17 ठीक आ रहा है. इसकी मैंने रीजंस बता दी थी पिछले क्वेश्चन में, दूसरे वाले के कि बेसिकली इट कैन कॉज म्यूटेशन, इट कैन किल सेल्स, कैंसर कॉज कर सकता है, आयनाइजेशन कॉज कर सकता है. एंड एक्सरेज जो है ना वो प्रीनेटल स्कैनिंग के लिए नहीं होती, वो बोन्स के इमेजेस बनाने के लिए यूज होती हैं. एंड इसका भी तो मैंने आंसर पूरा का पूरा लिखवाया हुआ है यहाँ पर. ये जो आंसर है ना ये वाला, ये एज इट इज वहां छप जाएगा. गिव मी. अच्छा, ये इतनी स्टावेज, इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी. जो आपका अपना प्रॉपर आंसर है ना उसको ही लिखा करो. सो हेड, अब आपने करना ये है कि मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आज की क्लास के हवाले से अपने ग्रुप्स पे. कैसे रही, तुम लोगों को कोई फायदा हुआ कि नहीं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और मुझे बताइएगा जरूर कि हम बहुत स्लो या बहुत तेज तो नहीं जा रहे. सो वी कैन सेट आवर पेस अकॉर्डिंगली. ठीक है जी, मिलते हैं फिर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.